प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Last time I discussed invocation of Ishopanishad. So today we will discuss first mantra of Ishopanishad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Ishavasya Sarvam Yatkinchad Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam. Ishavasya Sarvam Yatkinchad Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam. Ishavasya Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjita Magradha Kasya Svidhanam. Ishavasya Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam. Ishavasya Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam. Ishavasya Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam. Ishavasya Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam. Everybody. Ishavasya Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Magradha Kasya Svidhanam.
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुन्धीथा मा गृधा कस्य स्वेद्धनम्। Isha by the Lord, Avasyam controlled, Idam this, Sarvam all, Yatkincha whatever, Jagatyam within the universe, Jagat all that is animate or inanimate, Tena by him, Taktena set apart quota, Bundhitha you should accept, Ma do not, Gradaha endeavor to gain, Kasyasvid of anyone else, Dhanam the wealth. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshadarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpade Gopesha Gopiga Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vandavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this Isha Upanishad is called as Ishavasya Upanishad also. So in this Upanishad about the Supreme Lord is spoken, as is heard in the previous verse. Purnam Madaha Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Krishna is complete, and everything coming from Krishna is also complete. And when complete things are coming from Krishna, still Krishna remains complete. भगवान पूर्ण है, भगवान से जो आ रहा है भौतिक प्रकृति वो भी पूर्ण है, और पूर्ण भगवान से पूर्ण प्रकृति आ रहा है फिर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं. So that is the first verse. Second verse says that everything is controlled by Krishna. Isha Avasyam. ईश के वश्य में पूरा जगत है. यत्किंचित जगत्याम जगत idam sarvam. Everything, the whole world is under Krishna's control, fully under control. ऐसे बोलते हैं कि भगवान का कंट्रोल इतना है कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा. सुना आपने? भगवान के अनुमति के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है.
So much is controlled. Ultimately, God is controlling everything. Bhagavan is सबके नियंत्रक है. Actually, there are, for any phenomena, there is immediate cause, remote cause, and ultimate cause. Isn't it? So, for example, the wind is blowing, हवा चल रहा है. क्यों चल रहा है? उसका कॉज क्या है? इमीडिएट कॉज टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? टेम्परेचर डिफरेंस कॉजेस प्रेशर डिफरेंस. फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लोस. साइंस, राइट? जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ घूमता है. जहाँ पे लो प्रेशर डिप्रेशन बन गया तो हवा घूमता है, वो बनता है साइक्लोन. तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हो गया? Who is the cause of temperature difference? Sun. Sun causes, right? And then beyond that, who is the cause of light of the sun? Then comes to Krishna, right? So, Prabhasmi Shashi Shurayoham. Krishna says, I am the light of the sun and the moon. तो अल्टीमेटली भगवान की तरफ ही जाना है. जैसे इधर लाइट, बिजली आ रहा है, लाइट आ रहा है, यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है? पावर स्टेशन. पावर स्टेशन में कहाँ से आ रहा है? राइट. हाँ, विंड मिल है, या अपना रायचूर थर्मल पावर प्लांट है, या वाटर हाइड्रो पावर स्टेशन आर देयर. कैसे तो आ रहे हो. तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में पावर कैसे आ रहे हैं? बाय बर्निंग कोल, क्रिएटिंग स्टीम, दे आर रनिंग टर्बाइंस, इंडक्शन होता है, फिर पावर आता है ना. तो कोल किसने बनाया? हमने बनाया? नहीं, भगवान ने बनवाया इसको, राइट? हु इज मेकिंग द वाटरफॉल फ्रॉम हाइट सो दैट नो टर्बाइन रोटेट्स एंड देन द इंडक्शन इफेक्ट हैपेंस एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड? भगवान ही कर रहे हैं. So ultimate cause is actually Krishna. Like we are coming in train, we are sitting in one bogie. तो पहले वाला बोगी उसको खींचता है ना, उसके बगल वाला बोगी उसको खींचता है, and then the other bogie pulls it, and ultimately there is engine. Is engine running automatically? उधर पे एक ड्राइवर बैठा है. Ultimately it's controlled by some person, isn't it? So there is immediate cause, remote cause, ultimate cause. Suppose you get sick, okay? आपको बुखार आ गया. So what is the immediate cause and remote cause and ultimate cause? So what is the immediate cause? Okay, you might have eaten something wrong, you fell sick, okay. What is the remote cause? Everybody is eating the same thing. But everybody doesn't fall sick. So what is the remote cause? Immunity, okay. Somebody had less immunity, somebody had more immunity. जिसका कम immunity था उसको अटैक हो गया. क्या maybe food has some bacteria or something. तो जिसका immunity था वो कुछ नहीं हुआ उसको. जिसका immunity कम था, पेट दर्द and some infection started. So what is the cause of difference in immunity? Okay, what is the cause of difference in genes? Why are people born differently? सब लोग अलग अलग क्यों पैदा हुए हैं? कर्मा, right? So remote cause is karma. We have our own karmas. Somebody falls sick, somebody doesn't fall sick. Somebody has a healthy body, somebody has a weak body, right? जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Isn't it? So immediate cause is whatever bacteria, virus
whatever attacks. And remote cause is our karma. And what is the ultimate cause? Who is the controller of karma? Krishna. So that's why devotee thinks, if I am fallen sick, it is will of Krishna. Right? So whatever devotee thinks is that no, everything is caused by Krishna. But if something wrong he does, it is my mistake, not Krishna's mistake. Right? Whatever good is happening, Krishna is making it happen. And whatever bad is happening, my own past karma, which I have done, it's coming back to me. So ultimately, cause of all causes is Krishna. So what is the verse which says Krishna is cause of all causes? Yeah. Can you repeat? Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. The cause of all causes is Krishna. So everything is controlled by Krishna. Isha Vasyam. Right? Nothing is out of control. There are some Western philosophers, वो लोग बोलते हैं, पाश्चात्य thinkers, so-called intelligent people, one of them says कि भगवान ने सृष्टि बनाई और कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए भाग गए. तो विदेश में एक नॉवल है, उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन. एक विज्ञानी था, उसने एक डेड बॉडी में जान भर दिया अपना कुछ मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके, और फ्रैंकेनस्टाइन बहुत भयंकर राक्षस बन गया और विज्ञानी को ही खा लिया. तो लोग भी सोचते कि भगवान ने बनाया अब सब कुछ और कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसलिए भाग गए. सो ही कुड नॉट कंट्रोल. सो बट दैट इज नॉट द केस. गॉड इज फुली अंडर कंट्रोल. Everything is in full control of Krishna. Krishna says in many places in Bhagavad Gita, right, that I am the controller. Bhoktaram yajna tapasam sarva loka maheshwaram suhurdam sarva bhutanam gyatva mam shantim vrachati. Right, 5th chapter, 29th verse. Krishna is telling a very important verse. Krishna is Maheshwara. Ishvara means controller. Maheshwara means complete controller, supreme controller. So that is Krishna only. So जो कुछ भी हो रहा है भगवान के नियंत्रण में है, सब कुछ भगवान का ही है. It's owned by Krishna. So first thing is to know that it is controlled by Krishna. Second thing is it is owned by Krishna. सबका मालिक कौन है? कृष्णा ही है. Right? इस घर का मालिक कौन है? हाँ? Currently it's under care of someone, but right? So everybody has some property, right? आपका नहीं तो पिताजी का होगा. तो प्रॉपर्टी कुछ साल के लिए आपके नाम पे रहेगा. मरने के बाद अगर बेटे बच्चे हैं तो उनके पास चले जाएगा. अगर कोई नहीं है तो गवर्नमेंट ले लेगा. Isn't it? So we think that it is my property, but actually nothing is my property. सारा प्रॉपर्टी जो है भगवान का ही है. लोग सोचते हैं कि मेरा है और कभी भी उसको छीना जा सकता है. Right? Again, one place they were making a railway track. बड़ा रेलवे ट्रैक बना रहे थे, तो खेतों के बीच से जा रहा था. तो एक दिन गवर्नमेंट वाले आए, बोले सबको इधर खाली करना है, इतना जगह हमको चाहिए. सर ये तो मेरा है. नहीं नहीं नहीं, हम आपको पैसा दे देंगे, बस आपका पूरा लैंड हम लेने वाले हैं और उसे कंपनसेशन दे देंगे हम. सो देखिए कंपनसेशन, इट हैपन्स राइट. और दे रीलोकेट देम समवेयर, कहीं और दे देते जगह घर बना के. सो नथिंग इज अवर्स. There are higher powers controlling. And if they want, within a moment, it is gone. But in some places, they were making a dam. My grandfather used to tell the story. They were staying somewhere near Almaty, and when the dam project came, they said, "Khali karo sab." So because water will come, no, behind for several kilometers, several acres of area will be submerged in water. तो बोले कि सब खाली करो, यहाँ से निकलना है आपको. So then they gave some money and then they sent, then they relocated to some other village. So nothing is ours. We can't claim ownership of anything because everything is owned by Krishna. So everything is owned and controlled by Krishna. Whatever, anything animate and inanimate,
Inanimate means jada vastu. And Chetan vastu is also controlled by Krishna. We are also, हम सब भी भगवान के नियंत्रण में हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं, राइट. वी कांट रोम फ्रीली. आप हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते. एरोप्लेन में उड़ सकते हैं, मगर कितने साल के लिए? जब तक पेट्रोल है तब तक, बाद में वापस, राइट. देयर आर सम एस्ट्रोनॉमर्स स्टक अप इन द स्पेस स्टेशन, वापस नहीं आ पा रहे हो. महीनों बीत गया, वापस नहीं आ पा रहे, because some technical issue, they are not able to come back. Like Sunita Williams and one more guy, they are stuck up there. So we can't control things, right? We are also controlled by Krishna. We are not independent. So one should therefore accept only those things necessary for himself. सब कुछ भगवान का है, मगर भगवान ने हमको अनुमति दिया है, ठीक है, आपको कितना चाहिए उतना ले लो, राइट. टेक वॉट एवर दैट इज नेसेसरी, जितना जरूरत है उतना ही लेने का. यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, अपना कोटा भगवान ने रखा है, उस कोटे को आप एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज अलोड. बट माग्रदः कस्यस्वित् धनम, डोंट acquire others property, others wealth, भगवान बोल रहे हैं. So one should accept only that thing. So we need food, right? खाना चाहिए हमको जीने के लिए, तो जितना खाना चाहिए उतना लेना चाहिए, राइट. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस परपट में कि अगर कोई आदमी है, किसी ने राइस का बोरा रख दिया बाहर गेट के पास, राइट. बर्ड्स विल कम, व्हाट दे विल डू? दे विल ईट. How much they can eat? Whatever fills their mouth, they eat, fly. And maybe a cow comes, what it will do? It will eat till its stomach is full. Then after that, it will go. But if a human being comes, क्या करेगा? हाँ, पूरा उठा के लगेगा, देखिएगा लेफ्ट राइट कोई है कि नहीं. तो उसको बोलते हैं ग्रीड. So that is going against, that is sinful. भगवान ने हमारे लिए कोटा बनाया है, जितना कोटा चाहिए उतना लेने का, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए. माग्रदः कस्यस्वित् धनम, दैट्स व्हाट कृष्णा सेज. So always Prabhupada gives a long purport and explains many things in this, but I am going to focus on this mainly two things. One was three things. God is a proprietor of everything. भगवान सबके मालिक है, प्रोपरेटर है. हम सब केयर टेकर है, बस. जैसे वॉचमैन रहता है ना, जैसे किसी का घर है, घर के सामने वॉचमैन खड़ा रहता है. कैन वॉचमैन क्लेम दैट दिस इज माइन, दिस बिल्डिंग इज माइन? नो. वो हमेशा वॉचमैन, ही कीप्स वॉचिंग. सिमिलरली एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड एंड वी आर जस्ट वॉचमैन फॉर सम टाइम. वी वॉच द लैंड, मे बी वी एंजॉय द लैंड, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन मृत्यु कम्स, गो, राइट. So there are so many rich people, stinking rich people. They made a lot of property, but they went empty-handed. खाली हाथ चले गए, है ना. तो इतना सब कमाने के बाद भी हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सब कुछ इधर ही रहेगा, क्योंकि सब भगवान का है, भगवान का ही बना रहेगा. So that is the point. Proprietor and controller I already explained, and also is the enjoyer. Bhoktaram Yajnatapasam Sarvaloka Maheshwaram. So Krishna says that I am Bhokta. We are Upabhokta, secondary enjoyers. तो भगवान एंजॉय करते हैं. एक्चुअली हम जो भी कार्य करते हैं, इट शुड, द एंजॉयमेंट शुड गो टू कृष्णा. इफ देयर इज अ होटल, होटल का मालिक रहता है और होटल में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं. कोई क्लीनिंग करता है, कोई कैश कलेक्शन करता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड करता है, राइट. तो कोई कुकिंग करता है. सो मेनी पीपल आर देयर एंड ओनर इज सिटिंग इन वन रूम इनसाइड, एंड एवरी इवनिंग ही विल आस्क कितना है आज का हिसाब. ही विल एंजॉय. सब लोग काम कर रहे हैं, बट हु एंजॉयज? द ओनर एंजॉयज. ही इज काउंटिंग मनी. बट इफ एवरीबडी इज वर्किंग नाइसली, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट ही विल डू? Okay, he'll give them, okay, this is, I'm very happy with your job, take this much amount, and he'll make them happy. So similarly,
Krishna is the center of our center. Krishna should be the center. And whatever we do, वो भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए. राइट, भोक्ता आराम. जो भी इधर खाना बनाते हैं भगवान के लिए, जो भी कीर्तन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी हम प्रचार कर रहे हैं जीवात्माओं को भगवान से जोड़ने के लिए. वी आर कनेक्टिंग टू कृष्णा. वी आर नॉट प्रीचिंग फॉर आवर सेल्फ, वी आर प्रीचिंग फॉर कृष्णा. राइट, जो भी हम कार्य करते हैं वी शुड थिंक दैट इट इज फॉर कृष्णा's enjoyment, and when Krishna enjoys then we also enjoy. Right, so when Krishna eats, after Krishna eats we also get prasad, isn't it? Kirtan Krishna will enjoy, then we also enjoy nice tunes of Hare Krishna mantra. Right, suppose all of you together make a big temple for Krishna, and Krishna will give some place for us to sleep and do some seva, isn't it? So Krishna is enjoying and we are also enjoying, but we are secondary enjoyers, and primary enjoyer is Krishna. Bhoktaram, Yajna Tapasam, whatever yajnas, whatever tapasyas we do, ultimately Krishna is the enjoyer. Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarvabhutanam. And not only that, Krishna is a friend. हम सबका मित्र है. मित्र भी नहीं, सुहृद है. Right? In Sanskrit there are many words to explain. Bandhu, then there is Sakha, the Bandhu, Mitra, Sakha, Suhrud, like this, different words. And Bandhu means formal relationship. हे हमारे बंधु है. Right? दो परिवार ने शादी कर लिया तो बंधु बन जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं दोनों से बंधु. Mitra is little more formal, friend. It's Sneha, Snehit, or Sakha is little more intimate. Suhrud is heart to heart friend. जो दूसरे का हृदय जानता है, हृदय को समझ सकता है बिना बोले, that is a suhrud. Suhrud means what? He can understand the heart of the friend without the friend expressing. So Krishna is suhrud. Without we telling him, he knows what we need or what trouble we are in. That is suhrud. Suhridam, not only of devotees, he says Sarvabhutana, of all living entities, Sare Jivatmas, all the 84 lakh species. In whichever species we go, Krishna is our Suhrud, is a well-wishing friend of all of us. So we should have this faith. We should have this faith that Krishna knows and Krishna will surely help. So that is Suhridam Sarvabhutana. And Gyatva, and once you know these three things, Shantim Ruchati, you will attain peace. Right? If something is going out of control in your life, कुछ तो खराब चीज चल रहा है, but you know that Krishna is in control, so it will make us peaceful, right? हम शांत हो जाएंगे. भगवान को पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तो will become immediately peaceful. But if we try to take control of everything in our own hands, and sometimes it may not work. Sometimes we should let things happen and just take shelter of Krishna. जब कुछ होता है, difficulties आता है, तो we should let it pass. Then good times will come later. And when difficult situation is coming, then we should take shelter of Krishna, chant more, do more satsang and kirtan, and let the difficulties pass. और pass हो जाएगा तो अच्छा समय आएगा, isn't it? So Krishna is in control. That gives us peace. And Krishna is the enjoyer of everything. We try to enjoy, but we can't get enjoyment all the time. But when you try to please Krishna, you will also become pleased. Right? हम हमेशा के लिए एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ये कभी कभी दुख भी आ जाता है. तो इसलिए अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे. So we should try to endeavor to please Krishna. And then third thing is, Krishna is a friend of everyone. Krishna knows. So we can come and express our heart to Krishna. भगवान को अपना हृदय व्यक्त करना चाहिए. भगवान को पता है, फिर भी आके बोलना चाहिए. उससे संबंध गाढ़ा बनता है. राइट, भगवान को पता है, फिर भी अगर हम आके बोलेंगे ना, तो then Lord will take it more seriously. Right? So we should try to understand this consciousness.
So the Lord's proprietorship over this, everything within the universe is confirmed in Bhagavad Gita 7.4 and 5. किसको पता है श्लोका? 7.4 and 5. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. 8 elements. भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति है. I am the owner. Right? Bhumi, earth, apaha, water, anala, fire, vayu, air, kham means ether. Then mano, buddhi, ahankara. So these three are also iti me bhinna prakriti, my separated energy, Krishna says. तो सब भगवान का है. See, strange thing is, no, सब भगवान ने सबको फ्री दिया है. But still we have to pay for electricity. Still we have to pay for water bill, electricity bill, gas. God has given free. But लोग उससे पैसा कमाते हैं. भगवान ने सब कुछ फ्री दिया. भगवान टैक्स नहीं मांगते. भगवान क्या टैक्स क्या है भगवान के लिए? Gratitude. With gratitude we should use these things, understanding that Krishna has given it to me. In Kannada there is a beautiful bhajan. ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಬಾಳಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಚರಣ ಕಮಲವನೆನೆದು ಬದುಕಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕೆರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆರೆ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ. ಸೊ ಆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಡು ಆರತಿನ. ಆರತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ he is given earth, so we offer agarbatti, we offer lamp, it's a fire element, we offer water, arghya, we offer, right, we sing, we blow the conch, right, so we offer gifts. God has given us so many gifts. We offer vastra as a gift, and we so many things we do. So total 16 items we offer in actual temple Shodashopachar. So everything is given by Krishna. We offer it back to him and then enjoy whatever is remaining. So that's our philosophy. So we should not try to become independent enjoyers. We should try to give enjoyment to Krishna, right? So all the elements, even mana, buddhi, ahankar, how can we engage our mind in Krishna service? Always thinking of Krishna. How do we can think of Krishna? How do you use intelligence? Understanding the philosophy of Krishna consciousness, okay? ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಬುದ್ಧಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬುದ್ಧಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ರೈಟ್, ಸಪೋಸ್ we use our intelligence for doing programs, arranging big festivals, right? It needs planning. ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಈಗ ರಥಯಾತ್ರ ಕಮ್ಸ್ ನೋ, so many people are involved, so many intelligence are involved. So by that what happens? Intelligence get purified, ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬುದ್ಧಿನ ಕೆಟ್ಟ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಬುದ್ಧಿ, ಸುಬುದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಬುದ್ಧಿ. ಕುಬುದ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಕುಬುದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಮನಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕುಬುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದು ಸುಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸುಬುದ್ಧಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್?
more deep. Okay, you're telling about posts. I'm telling you ahankar. Ahankara means aham. Nanu, I'm something. Nanu, I'm something anta. Bhavane idೆಯಲ್ಲ. How can we utilize in Krishna's? What should we think to purify our ahankar? ನಾನು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ್. ದಾಸರೇನು ದಾಸ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ servant. Chaitanya Radas Mohi Chaitanya Radas Chaitanya Radas Thara Dasarenu Das. I am the servant of Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. So that is the consciousness one should have. Okay. Whatever post you may be, okay. You may be whatever police, or you may be a DC or BC, SP, whatever it may be. If somebody thinks that I am actually servant of Krishna, but now I have got this post, so let me use it in Krishna service. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಅದು ಅಹಂಕಾರ, ಶುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ. But if he thinks I am powerful because by my strength I came to this post, ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ in Krishna service. So that is good consciousness, isn't it? So Krishna says that all these 5 things, and then next thing he says is apare yamitastvanyam prakritim vidhi me param jiva bhutha mahabaho edam dharyate jagat. Jiva is also my energy, says. हम सब भी कौन है? भगवान की शक्ति. But we are Parashakti. Aparashakti is material elements. Parashakti is Atma, Jivatma. Right? Aparashaktiಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇಲ್ಲ, ಪರಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಇದೆ. ಸೊ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಕೃಷ್ಣನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಫುಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ Krishna. That I am not independent, I am dependent on Krishna. So that's the philosophy of Ishopanishad. Yeah. Both of these prakritis or energies are emanations from the Lord, and ultimately He is the controller of everything that exists. There is nothing in the universe that does not belong to either the para or apara prakriti. Therefore everything is the property of Supreme Being. सब भगवान का ही शक्ति है. Because the Supreme Being, the absolute personality of God, is complete person, He has complete and perfect intelligence to understand everything by means of His different potencies. The Supreme Being is often compared to fire, and everything organic and inorganic is compared to the heat and light of that fire. Just as a fire distributes energy in the form of heat and light, the Lord displays His energy in different ways. Ekadesha sthitasya agnihi jyotsna vitstarinyatha. And ಒಂದು ರೂಮಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರೆ ಸಾಕು, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತೆ. Similarly, Krishna is sitting in one place, but His energies are everywhere, all pervading. Parasya shaktir vividhaiva shruyate. भगवान का शक्ति कितना है? Unlimited. And is all pervading. हर जगह भगवान की शक्ति है, कोने कोने में भगवान का शक्ति काम कर रहा है. He thus remains the ultimate controller, sustainer and dictator of everything. He is the possessor of all potencies, the knower of everything and the benefactor of everyone. Right? Bhoktaram Yagdapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam. He is full of inconceivable opulence, power, fame, beauty, knowledge and renunciation. षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है. राइट? वेल्थ, उनके पास सबसे धनी व्यक्ति कौन? भगवान ही. राइट? अंबानी अडानी भी बहुत छोटे हैं उनके सामने. शक्ति, ख्याति, कुंभ मेला में देखो कितने लोग आ रहे हैं.
So famous. 40 crore I heard. They are making preparation for 40 crore people to visit. India ka almost 1/3 population will go there. Kumbh Mela. And सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, तो भगवान में सब कंप्लीट में है. One should therefore be intelligent enough to know that except for the Lord, no one is a proprietor of everything, anything. One should accept only those things that are set aside by the Lord as his quota. Example देते हुए, the cow for instance gives milk, but she does not drink that milk. गाय दूध पीता है, दूसरे को पिलाता है. She eats grass and straw, and her milk is designated as food for human beings. Right? वो घास फूस खाती है और हमको दूध देती है. Such is the arrangement of the Lord. ये भगवान का arrangement है. Thus we should be satisfied with those things He has kindly set aside for us, and should always consider to whom those things we possess actually belong to. Right? भगवान ने शेर के लिए खाना दिया है, वो अलग खाना है. हमको अलग से कोटा रखा है. हमको क्या खाना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. अगर आदमी भी जानवर की तरह प्राणी को खाता है तो वो पाप है. अगर शेर किसी प्राणी को खाता है तो पाप नहीं है, मगर मनुष्य कोई प्राणी को खाता है तो पाप है. राइट. टेक फॉर एग्जाम्पल आवर ड्वेलिंग. एक घर, वो मेड ऑफ अर्थ, पत्थर से बना हुआ है. Wood, stone, iron, cement, and so many other materials. If we think in terms of Ishopanishad, we must know that we cannot produce any of these things by ourselves. क्या हम पत्थर बना सकते हैं? पत्थर काट के ला सकते हैं, मगर पत्थर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. क्या हम लोहा बना सकते हैं? प्रकृति में मिलता है, उसको यूज़ करते हैं. We can't create any of these things. We can simply bring them together and transform them into different shapes and colors. हम उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको सृष्टि नहीं कर सकते. A laborer cannot claim to be the proprietor of thing just because he has worked hard to manufacture it. एक लेबरर था जो घर बना रहा था. 1 साल मेहनत करके घर बनाया, नाइस बिल्डिंग, कंपाउंड बनाया, सारा फ्लोरिंग डाला, इलेक्ट्रिसिटी सब चकाचक बना दिया. So when the home was complete, the owners came and said, इतना तुम्हारा compensation, तुम चले जाओ. This is your salary, you go. सर मैंने इतना मेहनत किया है, मेरा घर. नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया, तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, तो you go. Similarly, everything belongs to God. Who has created everything? God has only created. So सब कुछ भगवान की है. We can use, maybe that labor can stay for maybe some time in a small room outside and do some seva for the owner, then he will allow him to stay. Right? But if he tries to become the owner will send him off or call the police. Right? So that was our problem. हम भी भगवान की दुनिया में थे और हम भी भगवान की तरह भोगना चाहते थे. तो भगवान ने कहा इधर नहीं है, जेल में चले जाओ. तो they sent to this material world. भौतिक दुनिया एक जेल के बराबर है. जब भगवान के विरुद्ध काम करते हैं उनको इधर भेजा जाता है. Right? In modern society, there is always a great quarrel between laborers and capitalists. This quarrel has taken an international shape and the world is in danger. Right? There are laborers, Shudras, and there is capitalists, rich people. Right? Laborers want their rights and capitalists want to keep the wealth with them. They don't want to distribute. So दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है. Men face one another in enmity and snarl like cats and dogs. कुत्ते की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं. Shri Ishopanishad cannot give advice to the cats and dogs, but it can deliver the message of God to man through the bona fide acharyas. Right? The human race should take the Vedic wisdom of Sri Ishopanishad and not quarrel over material possessions. One must be satisfied with whatever privileges are given to him by the mercy of Lord. At भगवान की कृपा से जो भी हमको मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए. There can be no peace if the communists or capitalists or any other party claims proprietorship over the resources of nature which are entirely the property of Lord. कि अभी युद्ध होगा तो ऑयल के लिए होगा.
और ऐसी प्रेडिक्शन है कि बाद में युद्ध होगा तो पानी के लिए भी युद्ध होगा, राइट। हम डैम बनाएंगे, पानी लेंगे, राइट। ऐसे युद्ध के चांसेस है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कीप द रिसोर्सेज विद देम, बट एक्चुअली सब रिसोर्सेज सो भी भगवान का है। The capitalists cannot curb the communists simply by political maneuvering, nor can the communists defeat the capitalists simply by fighting for the stolen bread. You know communism, Maovad, everybody is same, everybody is equal, and everything belongs to government. Government is the owner ultimately, right? Like countries like China and all, they are like communist, and citizens don't have that much freedom. Everything is controlled by government. Even your mobile, even your everything is tracked. Media is tracked. Nothing is free there. Everything is monitored very minutely. Russia was also like that, but now it's democratic. So fighting is going on between communists and capitalists. If they do not recognize the proprietorship of the Supreme Personality of Godhead, all the property they claim to be their own is stolen. Right? Consequently, they will be liable to punishment by the laws of nature. See, if you don't recognize Krishna's ownership and we claim this is mine, then हम चोर है ना। भगवान का प्रॉपर्टी है, हमने क्लेम कर लिया, बोर्ड डाल दिया, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो पर्सन, तो वो सही नहीं है। But we can own some property for some time and we can put God's name. Some people put God's name, right? Krishna Bhavana, something like that. We can, ये भगवान का घर है, मैं इधर रह रहा हूँ कुछ साल के लिए. So that consciousness should be there. Consequently, they will be liable to punishment by laws of nature. Nuclear bombs are in the hands of both communists and capitalists. And if both do not recognize the properties of the Supreme Lord, it is certain that these bombs will ultimately ruin both parties. अभी बॉम्ब सबके पास है. ये प्रभुपाद जी 1960s में लिख रहे हैं ये किताब, अभी तो 2025. छोटे छोटे कंट्री के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया. So everybody is ready now to fight. But if they don't understand this ownership of God, and if they think that this country is mine, that country is theirs, no, what will happen? The fight will happen. But if everybody understands, okay, God has given us this property, I will be happy in this, and we will be happy in this. सब लोग संतुष्ट रहेंगे तो युद्ध नहीं होगा, isn't it? Thus, in order to save themselves and bring peace to the world, both parties must follow the instructions of Sri Ishopanishad. तो इसलिए ईशोपनिषद का जो तत्व है, ईशावास्य प्रिंसिपल, कि हम सबको समझना चाहिए. ठीक है, प्रभुपाद जी और भी लिखते हैं बहुत. But another main point is about that what I said, don't be greedy, right? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, the standard of life for humans cannot be applied to animals. Tiger doesn't eat rice. चावल खाता है टाइगर? नहीं. Nor does it drink cow's milk, because he has been given food in the shape of animal flesh. वो मांस खाता है. वैसे many animals and birds, some are vegetarian, some are carnivores, but none of them transgress the laws of nature. देखिए, सब प्राणी पक्षी जो नियुक्त है उनके लिए वही खाता है, मगर मनुष्य एक ऐसा स्पीशीज है जो सब कुछ खाता है, राइट? हवा में जो उड़ता है उसको भी खाता है, पानी के अंदर जो है उसको भी खाता है, जमीन पर जो चलता है उसको भी खाता है, राइट? अभी तो मनुष्य को भी खाने लगा है. And in some countries they eat embryos. Yeah, it's happening. Hare Krishna, horrible it is. And people are murdering and eating other human beings. It's happening, right? Animals, birds, reptiles and other lower life forms strictly adhere to the laws of nature. Therefore, there is no question of sin for them. अगर कोई प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है तो पाप नहीं लगता है, मगर मनुष्य खाता है तो पाप लग जाता है. Nor are the Vedic instructions meant for them. Human life alone is a life of responsibility. इसलिए मनुष्य जीवन बहुत जवाबदारी का जीवन है. इसलिए हमको
भगवान का नियम समझना चाहिए और नियम के अनुसार जीना चाहिए, तब हम खुश रह सकते हैं, राइट। जो मांस खाने वाले हैं ना, यू विल सी दैट नेक्स्ट लाइफ ही विल सफर, राइट। इट इज रॉन्ग however to think that simply by becoming a vegetarian one can avoid transgressing the laws of nature. Vegetables also have life. वेजिटेरियन भी पाप है ना, अगर कोई वेजिटेबल खा रहे तो भी पाप है, कि उसमें भी जीव है, राइट। तो अगर कोई वेजिटेरियन खाना भी खाता है तो उसको पाप लगता है, क्योंकि पेट को काट रहा है ना, पेट को काट रहा है। तो इसलिए जो साधु संत है वो काटते नहीं, व्हाट दे डू, दे टेक फ्रूट्स, फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो पेट पेट नहीं मरता, राइट। जंगल के साधु संत लोग दे टू डू दिस। अगर खाना पकाना, वेजिटेरियन खाना पकाना भी पाप है, कम है, प्राणी को कटना बहुत पाप है, और वेजिटेबल ही पाप है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए, तो पाप हट जाता है। कृष्ण से इन भगवत गीता, राइट। भुंजते ते त्वगम पाप ये पचंती आत्म कारण। जो खुद के लिए खाना बनाते हैं वो पाप है, जो भगवान को अर्पण करके खाता है वो प्रसाद है, पाप मुक्त खाना। Thus one should not be proud of being a strict vegetarian. Prabhupada said even monkey is a vegetarian, so what is great about it? Right? Animals do not have developed consciousness by which to recognize the Lord, but a human being is sufficiently intelligent to take lessons from the Vedic literature and thereby know how the laws of nature are working and derive profit out of such knowledge. Right? प्राणी समझ नहीं सकता ये नियम, मगर हम लोग समझ सकते हैं। सो मनुष्य को शास्त्र पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्या, हमको क्या बता रहे हैं। अगर मनुष्य इसको नेग्लेक्ट करेगा, इफ ए मैन नेग्लेक्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वैदिक लिटरेचर, हिज लाइफ बिकम्स वेरी रिस्की, राइट। वो दुख में पड़ जाएगा, क्योंकि वो पाप करेगा। ए ह्यूमन बीइंग इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड बिकम हिज डिवोटी। इसलिए मनुष्य को भगवान का भक्त बनना चाहिए और भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। He must offer everything for the Lord's service and partake only the remnants of the food offered to the Lord. सबको सिर्फ प्रसाद ही खाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। In the Bhagavad Gita, the Lord directly states that He accepts vegetarian food from the hands of pure devotee. Patram, pushpam, phalam, toyam, yome, bhaktya prayachati. तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि। I eat, मैं खाता हूँ, प्रेतात्मनः। Therefore, human beings should not only become a strict vegetarian, but should also become a devotee of the Lord, offer the Lord all His food, and then partake of such prasadam, or the mercy of God. Only those who act in this way can properly discharge the duties of human life. Those who do not offer their food to the Lord eat only nothing but sin, and subject themselves to various types of distress which are the result of sin. Right? जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता है सिर्फ पाप ही खा रहा है। भुंजते ते त्वघम पापा। So last paragraph, Prabhupada says, the root of sin is deliberate disobedience to the laws of nature, right? Through disregarding the proprietorship of the Lord. अगर हम भगवान का नियंत्रण को नकार देंगे और मनमानी करेंगे तो वो पाप है। So the root cause of पाप is, पाप का मूल क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान की अस्तित्व को नकारना। That is the root cause of all sinful activities. Disobeying the laws of nature or the order of Lord brings ruin to human being. Conversely, one who is sober, who knows the laws of nature, and who is not influenced by unnecessary attachments or aversion, is sure to be recognized by the Lord, and the Lord becomes eligible, and thus becomes eligible to go back home, back to Godhead, to the eternal home. इसलिए हमको भगवान का नियंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, भगवान का ओनरशिप को भी स्वीकार करना चाहिए और भगवान का भक्त बनना चाहिए। तब हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। जब तक हम भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। सो वी शुड ट्राई टू endeavor to become a good devotee of Krishna by recognizing Krishna's ownership and
proprietorship. Okay, so I'll end here. Any questions anybody has on this topic? It's in, we don't know when it will come. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರ್ಮ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ನಾನು ಸೀನ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. Suppose a person is supposed to be killed in a car accident, for example, and you are driving the car, and a person came in front, and you hit him, and you say, okay, it was his time to die. ಸಾಯೋ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು, ಸತ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀನು ಕಾರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. We became an instrument. So that's why we also get the reaction. Right? A person has desire to kill and a person is supposed to be killed. Both come. Because he desired to kill, he will suffer. ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. Right? ಸೊ ಇಚ್ಛೆ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರು ಕಾರಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ರೈಟ್? ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪ್ರಕೃತಿ. Is happening because of Prakriti. And our suffering and happiness is because of our desires. One thief was there, one murderer was there. He murdered person and police caught him, took him to the jail. Sir, ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೈ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತು, ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I didn't, don't kill me. My hand murdered. But okay, the hand is in control of Prakriti, but you desired, right? ಯಾರು ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನು. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Because people argue like this. An actual case came to the court. He said, see, hand is controlled by Indra. So go and catch Indra. But you desired, no? Your desire is so strong that God allowed. Demigods also cooperated, and then you killed. So they are not responsible, we are responsible. Does that clarify? So we cannot escape reactions. Reactions will come. Yeah, by working, by doing some work, whatever you get, that's your quota. Okay. You can go and ask him, can I get some fruits? Whatever you get, be happy with that. Isn't it? If you want something, you can go and ask. If somebody gives, fine. Krishna may give through them. Whatever is your quota, be happy with that. Suppose you are working, your earnings, you are working for 8 to 10 hours and you are earning some amount of money. Be happy with that. Because whatever is supposed to come will come. Maybe you can make a plan. Okay, in that 8-10 hours, okay, how can I work better? What are better options? You can try. But ultimately, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರಬೇಕು. One should not be greedy. You can't compare with Ambani. Every second is earning crores of money. It is quota. But somebody even working so hard, daily 100 rupees he earns. Everybody's quota is different. And be happy. Krishna says, be happy. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರಿ. ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ.
Nowadays people take loan. ಓ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವನ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸಂತುಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆನು, ಹಿ ಗೇವ್ ದಟ್, ವಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟ. ನಾಳೆ ಒಣ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಣ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಸ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್. Sometimes he'll give a feast also. Be happy with that. So one should, whatever is got to be happy. One should not expect things. Right? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಸುವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೃಷ್ಠಾನ ಉಣಿಸುವೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಜನರಲ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಸ್ be happy, don't lose your satisfaction. Okay, it's maybe it's Lord's will that I go like this today, I'll travel like this. That's how we should be. If you expect, you'll be miserable. So that is satisfaction. Be happy with whatever is you are coming. Be satisfied. Okay, any other questions? Okay, we'll end here. Srila Prabhupada ki, Ishopanishad ki jai. So program, I think some how many? 15 are registered. 15 people. Good, na? Paid registration. Right? Free ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋರು.